ٹھیک ہے سر. Okay. Column chromatography. Today we will discuss about the how we will separate organic compounds by using column chromatography. Right. Before going into a detail of column chromatography, we just discuss a little bit about chromatography. Michael Tesfaye invented chromatography in 1901 during the research on plant pigments, right? Uh, he used the technique to separate various plant pigments such as chlorophyll, xanthophylls, and carotenoids, right? Initially, he was used this chromatographic technique to separate different plant pigments, right? So initially, when uh, column chromatography was first time used, at that time, uh, he start a glass column is filled with powder limestone. Initially इसने जो काम किया था लाइम स्टोन इसके अंदर यानी इस कलम के ऊपर लोड किया था, ठीक है. और फिर इसके बाद इसने दूसरा जो सिस्टम निकाला, इसने ए सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, तो जब इसके अंदर लोड किया और इसके ऊपर पिगमेंट्स को इसके ऊपर लोड किया, प्लांट पिगमेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स, इसके नतीजे में जब सॉल्वेंट्स मोबाइल फेस ऊपर से मूव होने लगा तो इसके नतीजे में a series of color bands is seen to form corresponding to different pigments in the original plant extract. These bands were later determined to chlorophylls, xanthophylls, and carotenoids. So, जो बाद में क्लोरोफिल, xanthophylls या carotenoid के नाम से जाने लगे, ठीक है. तो इनिशियली इसने एक कॉलम जो लाइम स्टोन वगैरह इसने यूज किया था इसमें, ठीक है. और सॉल्वेंट्स जो है इसने इथेनॉल and ethanol extract of leaf pigments is applied to the top of the column here, right? Ethanol is used to flush the pigments down the column. जब इसने सॉल्वेंट यहाँ से मोबाइल फेस मूव किया यहाँ से, तो ऐसे रिजल्ट इसको डिफरेंट बैंड्स नजर आए जो बाद में आइडेंटिफाई किया गया. तो वो क्लोरोफिल था या xanthophyll था और कैरोटीनाइड, इस तरह से ये इसने सेपरेट किया था. So the word chromatography is a Greek word, chroma, that is color, and graphene, that is writing, right? Tesfaye named this new technique chromatography based on the fact that it is separated components of a solution by color. Initially, कलर की बुनियाद पर कंपाउंड्स सेपरेट करते थे. ये इस वक्त की बात है जब 1901 में या इसके बाद जो इस पे काम हुआ था, ठीक है. तो ये एक रशियन बोटनिस्ट था, इसने इस काम को स्टार्ट किया था, क्रोमेटोग्राफी का जो काम था, ठीक है. बाद में इसमें नई डेवलपमेंट आ गई. सो there are different common types of chromatography. So Tesfaye's technique is based on liquid chromatography. There are now several common chromatographic methods that include पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं HPLC, ठीक है. और आयन क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी. So these all are not included in your syllabus. We will discuss only the paper chromatography, thin layer chromatography और column chromatography. ये हम discuss करेंगे, ठीक है. So before going into detail of column chromatography, we have already discussed the paper chromatography and thin layer chromatography. So you see here, this is a TLC, thin layer chromatography, right? You just, this is the bottom line and this is the sample loaded here, and this is the TLC tank, right? The solvent moves up paper by capillary reaction, right? Carrying mixture components at different rates. I have already discussed in my previous class about the RF value. RF value की बुनियाद पर हम ये solvent front है और इस तरह से इस मिक्सचर से ये तीनों कंपाउंड जो है इस तरह से सेपरेट होते हैं. ये हमारी TLC थी जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्वेंट की मूवमेंट होती थी, ठीक है. How does chromatography work? अब ये chromatography काम कैसे करती है? In all chromatographic separation, the sample is transported in mobile phase. I have already discussed you that in chromatography there are two phases. One is mobile phase and another is stationary phase. In column chromatography and thin layer chromatography, silica, alumina,
are stationary phases, while different solvents, suppose hexane, ethanol, dichloromethane, ethyl acetate, these are the mobile phases, right? But there is gas chromatography where mobile phase is a gas, right? Which is called a gas chromatography, GC, right? So in all chromatographic separation, the sample is transported in mobile phase. The mobile phase can be a gas, a liquid, or supercritical fluid. The mobile phase is then forced through a stationary phase held in a column or a solid surface, right? I have already shown you in my previous lecture. The stationary phase need to be something that does not react with the mobile phase or the sample. हमारे पास stationary phase ऐसा होना चाहिए जो इसके mobile phase के साथ reaction ना करें, ठीक है? The sample then has the opportunity to interact with the stationary phase as it moves past it. Sample that interact gradually then appear to move more slowly. Sample that interact weakly then appear to move more quickly. वो sample जल्दी यानी इनकी मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी जो इस सिलिका के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, ठीक है? लेकिन मैंने कहा था पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में, because of this difference in rates, the sample can then be separated into their components. ये क्रोमेटोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, CS divided by CM, right? CS is the molar concentration of the solute in the stationary phase, and CM is the molar concentration in mobile phase, right? ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. So this is basics about all chromatographic techniques. Now we will discuss the experiment, separation of organic compounds by column chromatography. What is the principle, basic principle? The main principle involved in column chromatography is adsorption of solute of a solution through a stationary phase and separates the mixture into individual components. This is based on the affinity towards the mobile phase and stationary phase. हम इसमें different components को different compounds जो हमारे पास हो सकता वो polar हो या non polar हो, इनकी स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन की बुनियाद पर हम इनको सेपरेट करते हैं. कैसे करते हैं? आप यहाँ पे आप देख लें, दिस इज ए कॉलम, आप इसको देख लें, इसका स्ट्रक्चर, दिस इज ए कॉलम, ये आपको नजर आ रहा है. इस कॉलम को आप देख लें. इस कॉलम में आपने देखा कि इसके एंड में इस कॉलम के की जो डिजाइन है, इसमें इस पे एक क्लोज यानी इसको यहाँ पे क्लोज किया जाता है, या तो ये ऑटोमेटिक ये बना हुआ होता है या आप यहाँ पर कॉटन लगाना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर सिलिका ऊपर से इसको पहले सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सिलिका यहाँ पे इसको लोड करते हैं इसी के ऊपर. तो इसी तरह से ये एक कॉलम तैयार होगा. फिर हमारा जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, इसकी स्लरी बना के इसको यहाँ ऊपर, ये जो आपको निशान नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको यहीं पे रख देते हैं और ऊपर से सॉल्वेंट जो है रेगुलरली मूव होता रहता है. जब इस कॉलम को पैक करते हैं, इस वक्त ही यहाँ से सॉल्वेंट जो है इसको मूव करवाते हैं. हम सपोज हम हेक्सेन में हम इस स्लरी को पैक करते हैं. कॉलम पैक करने के बाद पैक करते हुए हम यहाँ से ओपन रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह पैकिंग हो और सॉल्वेंट आता जाता है और हम ऊपर से सॉल्वेंट डालते जाते हैं और मजीद सिलिका जो है यहाँ पे मजीद ऐड करते हैं. ओके, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है. इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी is a useful method for separation and purification of solids and liquid samples under 10 grams. Suppose column chromatography, which is in short we can say CC, right? Column chromatography is a CC, that is column chromatography works on the same principle of the thin layer chromatography, except अब ये जो काम कर रही है column chromatography और TLC तकरीबन सेम काम कर रही है, सेम प्रिंसिपल पे. तो हम column chromatography
यानी यूज करने से पहले हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं और कंफर्म करते हैं सॉल्वेंट सिस्टम को, इसके बाद फिर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तरफ आते हैं, ठीक है। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्सेप्ट, क्या डिफरेंस है, that the sample solution flows down a column of silica gel or alumina filled with the solvent। आप जानते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अपवर्ड मूवमेंट्स होती है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है मोबाइल फेज में, लेकिन यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट की मूवमेंट डाउनवर्ड होती है, ये डिफरेंस है। बाकी सारा प्रिंसिपल जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सेम है। So column chromatography works on the same principles of thin layer chromatography, except that the sample solution flows down a column of silica gel or alumina filled with the solvent, right? तो ये है। अब partition coefficient represents the efficiency of the column and is determined by the solubility of the solute in the two phases। अब दोनों phases में कि इस column की efficiency क्या है, ये पार्टीशन कोफिशिएंट के जरिए हम निकालते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन रेशियो कहलाता है कि CS डिवाइड बाय CM, दैट इज CS इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द स्टेशनरी फेज एंड CM इज द मोलर कंसंट्रेशन इन द मोबाइल फेज, राइट। इसी की बुनियाद पे हम इसको वो करते हैं। A partition coefficient represents the efficiency of the column and is determined by the solubility of the solute in the two phases। दो phases में हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर क्या है, ये आपके पास आप जानते हैं। यहाँ पर नीचे आप इनिशियली कलेक्शन जो है फ्लास्क में किया जाता है, लेकिन बाद में आप वाइल्स यूज करते हैं, जो वाइल्स छोटी छोटी वाइल्स होती हैं, ग्लास वाइल्स। Only complete part 1 micro scale। okay, this one, suppose एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपाउंड्स हैं, फिरोसिन एंड एसिटाइल फेरोसिन। ये दो कंपाउंड एक मिक्सचर के अंदर है। अब उस मिक्सचर की पहले हम सिलिका के साथ या एल्यूमिना के साथ मिला के हम स्लरी बनाते हैं। एल्यूमिना और सिलिका बोथ आर स्टेशनरी फेजेस, इनके साथ स्लरी बनाते हैं। स्लरी बना के इसके बाद हम कॉलम को पैक करते हैं। कॉलम को पैक करने का तरीका ये है, इसको स्टैंड में यानी बांध लेते हैं, ठीक है, स्टैंड में लगा देते हैं इसको। फिर हम सिलिका जो है किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके पोर करते हैं इसके ऊपर। तो ये सिलिका इस तरह से यहाँ तक, ये जो निशान दिया हुआ है यहाँ तक इसको भर देते हैं कम्प्लीटली, और इसी दौरान हम इसको सॉल्वेंट को कम्प्लीटली मूव करवाते हैं नीचे, ताकि कॉलम जो है इसकी अच्छी तरह पैकिंग हो, ठीक है। ये देखिए सॉल्वेंट की कंप्लीट मूवमेंट हो रही है और इसके नतीजे में तमाम ये जो सिलिका है कम्प्लीटली पैक हो गई। तो इसके बाद जो स्लरी हमने बनाया था, हमने अपने सैंपल के अंदर थोड़ी सी सिलिका डाल के वी हैव मेक ए स्लरी, उसको फिर ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिर इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके इसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं। पाउडर फॉर्म में ला के फिर इसको यहीं पे जो हमारा पैक कॉलम है इसमें हम वी जस्ट पोर आवर पाउडर स्लरी ऑन टॉप ऑफ द कॉलम, यहाँ पे हम इसको यहीं पे डाल देते हैं और इसके साथ सॉल्वेंट जो है कम्प्लीटली मूव होता रहता है, ठीक है। सो टेकिंग द कॉलम, मेक श्योर योर कॉलम हैज ए वेल स्टॉपर सिस्टम इन वन नैरो एंड। एक साइड पे जो है स्टॉपर लगा होना चाहिए। ये जो स्टॉपर है ये इस तरह से स्टॉपर आपके कॉलम में लगा होना चाहिए, ताकि आपकी सिलिका नीचे नहीं आए और सॉल्वेंट आपके कंट्रोल में हो, जब चाहे कॉलम ऑन करें और जब चाहे बंद करें। लेकिन अगर स्टॉपर नहीं लगा है तो इस वक्त हम क्या करेंगे, नीचे आपके पास टिप होती है, आप खुद भी इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉलम शुड बी अंडर योर कंट्रोल, इसीलिए मेक श्योर योर कॉलम हैज ए वेल स्टॉपर सिस्टम इन वन नैरो एंड ऑफ द कॉलम, राइट। पोर द सिलिका जेल into the column। so यहाँ पर आप सिलिका जो सॉल्वेंट के अंदर हमने डिसॉल्व किया है इसके अंदर पोरिंग करेंगे इसकी into the column। so it is 1/2 or 2/3 full। इस कॉलम के साइज के मुताबिक 2/3 इसको हम फुल करेंगे, इसके अंदर पैक करेंगे, ठीक है। ये है पैकिंग ऑफ द कॉलम, इसका प्रोसीजर है, ठीक है। pour this silica gel into 50 ml beaker and 8 ml हेक्सेन। सपोज हम 50 ml बीकर के अंदर हम सिलिका
ڈال دیں گے اور اس میں 8 ml جو ہے ہیگزین اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ڈیزولو کرنے کی کوشش، چونکہ سولبل تو نہیں ہوگی لیکن اس کے اندر وہ اس کو مکس کریں گے. کلیم دا کالم ان اے ورٹیکل پوزیشن، رائٹ. اسٹینڈ کے ساتھ اس کو باندھیں گے، ساتھ ساتھ اس کو لگائیں، فکس کریں گے اسٹینڈ کے ساتھ. کلیم دا کالم ان اے ورٹیکل پوزیشن لائک دس ون. دین ایڈ 2 ml آف ہیگزین ٹو دا کالم. اسٹائر دا ہیگزین. اس ہیگزین کو ہم کمپلیٹلی اسٹائر کرتے رہیں گے. سلیکا جیل مکسچر while pouring into the column. Open the wall, right. جب ہم اس کو پور کر رہے ہیں اس وقت وال کو اوپن رکھنا ہوگا تاکہ ہماری جو کالم کی پیکنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. Stir the hexane silica gel mixture while pouring into the column. At the same time, open the wall and drain the solvent in a flask. ایک فلاسک کے اندر ہم اس سالوینٹ کو ڈرین کریں گے. Don't let the solvent level get below the silica gel. ہماری جو سلیکا جیل ہے اس کا لیول سپوز یہاں تک ہے تو سالوینٹ کا لیول یہاں تک ہونا چاہیے، یعنی سلیکا جیل سے جو ہم نے پیک کیا ہے اس سے اوپر سالوینٹ کا لیول ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے. So open the wall and drain the solvent. Do not let the solvent level get below the silica gel, right. تاکہ اگر یہ ایک مرتبہ ڈرائی ہو گیا اس کے لیول سے نیچے آ کے تو وہ کالم آپ کا ضائع ہو جائے گا. Then that column cannot work properly. So repeat the last 3 steps until all the silica gel is in the column. یہ جو ہم نے جو 3 اسٹیپس بتایا یہ ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنا کالم اپنی لیول تک اس کو کمپلیٹلی فل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس کو کرتے رہیں گے. Close the wall with some solvents remaining at the top. پھر اس وال کو بند کریں گے اور اس کے اوپر کچھ سالوینٹ مزید ڈال کے اس وال کو بند کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ فالو دا فردر ایکسپریمنٹ کے لیے ویٹ آف دا کروڈ فیروسین اینڈ کروڈ اسٹائل فیروسین. یہ ہمارے پاس 2 کمپاؤنڈس اس مکسچر کے اندر ہے، ان کا پہلے ویٹ کریں گے کہ ان کی ویٹ کتنی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مکسچر ہے اگر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر اگر پلانٹ کا ہے تو وہ تو بالکل ان نون ہوتا ہے، لیکن ایک سپوز آپ سینتھیسس وغیرہ یا کچھ اور کرتے ہیں تو آپ اس کو پہلے سے مکسچر پتہ ہے آپ کو، ان کو الگ کرنا ہے تو ان کا میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم اب یہ کالم اس کو رن کریں گے کمپلیٹلی تو اس میں جو مور پولر کمپاؤنڈس ہیں وہ بعد میں آئیں گے اور لیس پولر کمپاؤنڈ کی موومنٹ جو ہے وہ پہلے ہوگی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کون سا موبائل فیس استعمال کیا ہے. اگر ہم نے ہیگزین استعمال کیا ہے تو لیس پولر سالوینٹ جو ہے ان کی موومنٹ پہلے ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کے مطابق ہم اپنی پولیرٹی بڑھاتے رہتے ہیں، مینس ہم 10% ڈائکلومیتھین وتھ ہیگزین، اس کا مطلب ہے 90% جو ہے آپ کا ہیگزین ہے لیکن 10% بڑھانے سے اس کی پولیرٹی انکریز ہو گئی تو آپ کے پاس پولر کمپاؤنڈس کی موومنٹ بھی ہو جائے گی. اسی طرح سے ہم پولیرٹی بڑھاتے جائیں گے. TLC سے ہم یہاں چیک کرتے جائیں گے کہ آیا ہمارے پاس کمپاؤنڈس کی موومنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح سے ہم ڈیفرنٹ کمپاؤنڈس کو آن دی بیسس آف دیئر پولیرٹی اینڈ انٹریکشن وتھ سلیکا اور ایلومینا، ان کمپاؤنڈس کو ایسا ایسا پہلے نان پولر کمپاؤنڈس پھر پولر کمپاؤنڈس جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس طرح سے سیپریٹ ہو جائیں گے تو کمپاؤنڈس کو سیپریٹ کر کے اب یہاں پر 2 اسٹیجز ہیں. اگر آپ کو پہلے سے نون کمپاؤنڈس ہیں، ایک مکسچر کے اندر پہلے سے نون ہے کہ اس کے اندر سپوز فیروسین اور اسٹائل فیروسین کا کروڈ آپ کے پاس موجود ہے، یہ پہلے سے پتہ ہے تو آپ کو اس میں فیروسین اور اسٹائل فیروسین کا میلٹنگ پوائنٹ وغیرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ جو الگ ہوئے ہیں کمپاؤنڈس یہاں پہ ان فلاسک کے اندر، سیکنڈ اسٹیپ جو ہے یہاں پر ان فلاسک کے اندر سالوینٹ لیکوڈ فارم میں ہوگا، پھر اس کو ایواپریٹ کرنا ہوگا. ایواپریٹ کے لیے ہم ایواپریشن کے لیے ہم اگر کوئی لیس پولر سالوینٹ ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ہم رکھ دیں گے وہ ایواپریٹ ہوگا. لیکن ڈسٹلیشن اسمبلی یوز کریں گے. اگر ہمارے پاس پولر سالوینٹ ہے تو ڈسٹلیشن اسمبلی کے ذریعے، آپ جانتے ہیں ڈسٹلیشن کا مطلب میں نے آپ کو آلریڈی کلاس میں ڈسکس کیا ہے، فرسٹ ایواپریشن دین کنڈنسیشن.
روٹری ایواپریٹر کے ذریعے اس سالوینٹ کو آپریٹ کریں گے اور ہمارے پاس جو ہم سیمپل جو ہے یہاں پہلے نان پولر کمپاؤنڈس آ جائیں گے، پھر پولر کمپاؤنڈس، اسی طرح سے ڈفرینٹ کمپوننٹس جو ہیں آرگینک کمپاؤنڈس سیپریٹ ہو جائیں گے. تو پھر ان کمپاؤنڈس کا اگر ہمارے پاس پہلے سے مکسچر نون ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم ان کا میلٹنگ پوائنٹ لیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کون سا کمپاؤنڈ، یعنی ہر ایک کا میلٹنگ پوائنٹ فکس ہوتا ہے. اس طرح سے پرسن ریکوری جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ہم پلانٹ سے کوئی کمپاؤنڈ آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو پیور کمپاؤنڈ ہے ان کی دوبارہ ہم یہ پیور ہیں یا نہیں ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے تھن لیئر کرومیٹوگرافی لگاتے ہیں. تھن لیئر کرومیٹوگرافی کے اوپر اسپاٹ لگا کے جو تھن لیئر کرومیٹوگرافی کا جو پروسیجر میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے، اس کے مطابق چیک کریں گے کہ آیا ہمارا جو کمپاؤنڈ ہے یہ پیور آیا ہے یا نہیں آیا ہے. اف دا کمپاؤنڈ از پیور، اس کو پھر ان نون پلانٹ سے ہم نے یا اینیمل سے ہم نے آئسولیٹ کیا ہے تو اس کو اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیک کے ذریعے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس میں کتنے کاربن ہیں، کتنے نائٹروجن ہیں اور اس کا اسٹرکچر کیا ہے، مالیکولر فارمولا کیا ہے. یہ سارا اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیکس ہمارے پاس ماس اسپیکٹرومیٹری ہے، این ایم آر ہے، یو وی اینڈ آئی آر، اور پھر بعد میں ایکس رے کے ذریعے فردر کنفرم کیا جاتا ہے. تو یہ ان ٹیکنیک کے ذریعے اس کی مالیکولر فارمولا ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس یہ مکسچر پہلے سے نون ہے تو ان کو جسٹ میلٹنگ پوائنٹ سے جو کمپاؤنڈس آئسولیٹ ہوئے ہیں ان کا میلٹنگ پوائنٹ لیں گے اور میچ کروائیں گے کہ یہ کون سے کمپاؤنڈ ہیں ڈیٹا کے ساتھ. ٹھیک ہے، رائٹ. یس سر. So this is all about column chromatography. اس طرح ہم اس کو ہم کر سکتے ہیں. Now